हेलो एवरीवन। तो आज फ्राइडे इवनिंग है एंड मुझे लगा कि और एक वीडियो बनाना चाहिए मुझे, बिकॉज आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। और काफ़ी टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, बट देन आई रेड द कॉन कॉल और फिर ये कंपनी में जो हो रहा है मुझे लगा आई शुड शेयर इन दिस वीडियो। सो द नेम ऑफ द बिजनेस इज, जो स्टॉक का नाम है वो है रोसेल टेक्सिस। नाउ रोसेल टेक्सिस इज इनटू it is into wire making wires for the aerospace sector। तो यहाँ पे ये सब जो डिफेंस सेक्टर एंड एरोस्पेस है उसके लिए वायर्स बनाते थे, बट नाउ दे हैव चेंज इनटू, रादर आई वुड से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ये अपने आप को, एंड दे आर गेटिंग इनटू मल्टीपल सेक्टर्स। सो मल्टीपल सेक्टर्स लाइक space is there, aerospace is there, and they are talking about semiconductors is I think very important। और ये सब वो कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे हैव दिस डिफेंस आल्सो into which they are there। तो ये सब कर रहे हैं, एंड देन scope is huge, and they are like something like who just like Tesla I would say। मतलब ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो दिस इज अ वेरी बिग कंपैरिजन, बट these people are doing something really great। The promoters are well educated, and दे नो द बिजनेस वेरी वेल। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं, Q1 तो अब आना है, बट देन द गाइडेंस फॉर देव गिवन इज वेरी इंटरेस्टिंग। दे आर सेइंग वही गाइडेंस है जो लास्ट ईयर उन्होंने किया है। सो फुल ईयर दे हैव बीन एबल टू डू अबाउट 87% का ग्रोथ कर दिया उन्होंने। सो 87% का ग्रोथ इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग in the revenue part, and PAT also has grown equally that much। So that is very interesting। And semiconductor का जो उनका space है, they've recently started getting into the semiconductor space। They're saying it will grow by 300 to 400%। Immense I think value generation। तो गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि players get into the semiconductors, because again we'll need this for making chips, and to have those high end processors जो चाहिए हमें for this AI, and high speed computing। So we need all that, and I think India is doing that। Make in India वो जो हम बात करते हैं हमेशा, it's been in the news for so many times, but then here is a business that is trying to do it। Now it's very interesting। और कौन कॉल अगर आप पढ़ोगे तो मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट टू डू दिस, and they are coming up with another facility also coming up in the sense उन्होंने लीज किया है। they have not bought the place and then try to do some construction। then नहीं, उन्होंने लीज किया है, and that also capex is doing very well। so I think very bullish guidance। and this space like semiconductors and then the existing business उनका जो है it is very good। so if I talk about numbers, they are having a purchase order of 715 crores। 3000 crores के उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, and they expect more in the coming future। so I think interesting business model। स्पेस में भी ये कुछ कर रहे हैं, and they are trying to explore that theme as well। so I mean this is a very big opportunity, and I think you don't find such kind of a business in India at least। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने उसको टेस्ला से कंपेयर किया। आई थिंक दे आर वेरी optimistic, and they have been doing very well। so again guidance looks very rosy। बहुत अच्छा लगता है, and 87% I don't think so there's even one stock that is even promising that। of course कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आके कोई guidance नहीं बता रहा। so I think we'll have to track this, and there is definitely something happening here। and just a wires cable company से वो wires बनाते थे for this aerospace, and then now they're transforming into this whole thing of semiconductors, and other space business, aerospace business। तो जब ये सब कर रहे हैं, so that means a lot। and of course they have hired a lot of people। बहुत सारी हायरिंग की एम्प्लॉयज की, उनको ट्रेन किया है, and they are looking at automation also। they've done a lot of automation also। so this means they are very much eager to use the new technology, and they're moving in the right direction। last thing, they also plan to do a QIP। ठीक है, तो ये QIP करना चाहते हैं, एंड द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज दे वांट टू ग्रो, यूज दैट कैपिटल फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, do more of automation, and get better at what they do। so I think
लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग रसेल टेक्सिस, और इसको देखना ध्यान से। अब ये देखना है कि जब Q1 का रिजल्ट आएगा तो ये क्या जो उसने गाइडेंस दिया है वो उसको पूरा करता है या नहीं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स द पी लुक्स अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, बट दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब अगर ये 87% का जो उसने ग्रोथ किया, अगर वो उतना ही कर लेते हैं, इफ दे डू एनीवेयर बिटवीन 80 to 90% रेवेन्यू का ग्रोथ, देन आई थिंक द पी इज ऑल्सो जस्टिफाइड, बिकॉज यू डोंट फाइंड एनी स्टॉक्स जो इतने हाई पेस पे ग्रो करते हैं, एंड द बिजनेस इज जस्ट इन अ नीश स्पेस, एंड ऑल these categories, aerospace, semiconductors, they are growing, and government is with them, ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गवर्नमेंट wants to reduce the फॉरेन आउटफ्लो ऑफ द डॉलर, है ना, जो हम इंपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक ऑल प्लेस वेरी वेल, एंड इंटरेस्टिंग बिजनेस, इसको ट्रैक करना। मेक श्योर यू रीड अबाउट दिस, एंड ऑफ कोर्स जब Q1 के रिजल्ट आएंगे तो आई विल बी हियर टू ऑलवेज टेल यू एज टू व्हाट हैज हैपेंड। सो आई एम ट्रैकिंग दिस, एंड विल सी हाउ इट गोज। तो आप भी देख लेना इसको, कीप इट ऑन योर रडार, एंड यू कैन रीड अबाउट दिस, and if it does well, it does well. So we need to keep tracking these kind of high growth businesses. So go through that, and also let me know if you have any some interest, some other interesting businesses that you feel are having huge potential and growth. So iska market ka scope bhi bahut hai, but let's see. Only time will tell how this works. So that is all for today, and keep reading, and keep reading those con calls and PPTs, corporate documents ही पढ़ना है हमें, and always listen to the management as to what they are saying about the business. And yes, the whole purpose to do this is that management looks very confident, तो देखते हैं कितना ही एग्जीक्यूट कर पाते हैं, एंड इफ दे रियली एग्जीक्यूटेड देन आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टॉक, एंड वी वी डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस रेट पर ग्रो कर सकते हैं। सो अगेन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।